Hello student, welcome to Unique Digital Academy. So pilamane, so today we will discuss about some interesting, okay? तमे previous class रे भी पढ़िथिबो electricity विषय रे and magnet विषय रे भी पढ़िथिबो, ठीक अछि? So चलो आमे आजि रे चैप्टर रे तो सीधे जाक विषय रे डिस्कशन करबा. Electricity, magnetic and heating effect एगुडा को सब देखिबा. ओके? ओके, चलो. तो इलेक्ट्रिसिटी कौन जिते पढ़ा आगु आम इलेक्ट्रिसिटी विषय जाना कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भाई किसी भी चलो आज तो तुम मत वर्चुअल मीडिया देखुच मोबाइल की कंप्यूटर यूज करके तो तुम तो पढ़ुव ना नहीं तो सेटा दैट इज रन बाय इलेक्ट्रिसिटी. ठीक अच्छे दिस बोर्ड इज ऑल्सो रन बाय इलेक्ट्रिसिटी. सो मोस्ट ऑफ दैट थिंग इलेक्ट्रिसिटी रन हो कहवा कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो आम लाइफ इमाजिन करवा ना नथिंग बिना इलेक्ट्रिसिटी आज माने माने आज कथा जदि कहबा आज स्टेज कथा कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी आर नथिंग किछि नहीं हम पर किछि नहीं. ओके सो चलो हम स्टार्ट करबा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट विषय पढ़िबा. ठीक है दिस इज अ चैप्टर 4 ऑफ योर क्लास. देन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इफ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प जदि आम पाखर इलेक्ट्रिक लैम्प ही रहिबनी. So while making an electric circuit, तो with an electric cell, हमें electric circuit बनाओ, सिर्फ electric cell था, electric lamp था. Is there any other way through which we can find out if current is flowing in the circuit? करी परिबा कि? Okay. तार आंसर सब देखिबा. Is it possible to make temporary magnet करिबा possible कि? Yes, possible. पढ़िबा केमती possible है. How can this be made? ताले केमती तैयारी हुई से गुड़ा को सो से विषय देखिबा. Now we can generate heat by burning fossil fuel and wood. Fossil fuel use करके wood use करके आमे कोन heat generate करि परिबा कि देखिबा. Then but how is heat generated in various electrical appliances? So how is heat generated in various electrical appliances? तो आमे जानि छु जदि किछु टाइम आम जो मोबाइल चलेबा मोबाइल हिट हो जाउछि इंडक्शन हिट हो माने करंट रे आम करंट कोन होछि ना करंट रो इलेक्ट्रिक माने हीटिंग क्रिएट होछि फैन चलेले फैन हिट हो जाउछि. सो केमती हो जे से विषय आम सब देखिबा. देन हाउ डू वी नो इफ ए सेल और ए बैटरी इज डेड. तो से कहले हाउ डू वी नो आम केमती जानिबा गुटे सेल और बैटरी डेड हो जाइछि बोली. कैन ऑल द सेल एंड बैटरीज बी रिचार्ज सब सेल और बैटरी को हम रिचार्ज करि परिबा कि? ओके सो सम क्वेश्चंस आर अराइज फ्रॉम द चैप्टर. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिबा ए थ्रू देखिबा ए जति के भी क्वेश्चंस अराइज हैला तो हमें चैप्टर को पढिले इजीली जानि परिबा. ओके नाउ इट वाज द डे ऑफ द साइंस एग्जीबिशन रो दिन थिला कोन हला से दिन एंड द स्कूल वाज बजिंग विथ एनर्जी. ओके तो साइंस एग्जीबिशन माने सब पिला मानक बहुत एनर्जी अछि भाई आज साइंस एग्जीबिशन ऑल आर हैप्पी एंड बहुत पिला तन कोन हला ना मोहिनी एंड आकाश along with their friends मोहिनी एंड आकाश सेमन को फ्रेंड्स सहित आसतले went from one exhibition to another. तो गोटे एग्जीबिशन टू आ गोटे एग्जीबिशन को सेमाने जाउतले देखिया भाई. Then eagerly exploring different models से माने जिते बड़े different models से माने देखुतले. ठीक अछि asking question asking करतले and taking notes. One simple model really fascinated them. So it was a working model of a lifting electromagnet which was displayed by their senior. तो सुमना तो सेमाने कोन देखले गो इट होछि इट वाज ए वर्किंग मॉडल ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हिच वाज डिस्प्लेड बाय द सीनियर जो माने कि ताको सीनियर माने डिस्प्ले माने शो करौतले से माने. तो सीनियर किए दैट इज अ सुमना. ओके सो इन इट इंस्टेड ऑफ ए हुक like a typical crane typical crane देख चुसे बोले hook like typical crane. There was an iron nail wrapped with a wire. Iron nail को wire से तो wrap करके रखितले गुड़े करथिले
which was connected to a battery कहा सहित कनेक्ट था बैटरी सहित भाई से आयरन नेल जिते बैटरी सहित कनेक्ट हो गला ना सेटा मैग्नेट हो जिवो सो व्हेन सुमना क्लोज द सर्किट माने क्लोज माने तमे ऑन करिवा कथा कहबो जले सर्किट को क्लोज ऑन करिवो कोन हबो ना द नेल पिक अप आयरन पेपर क्लिप्स लाइक ए मैग्नेट सो आयरन पेपर क्लिप कोन करिवो जो आयरन नेल दिले से ताको उठै देबो दैट मींस तमे एटी जानिलो जिते बेले आमे आयरन ने करंट फ्लो करिलु सो आयरन नेल कन्वर्ट केमती हैला इट कन्वर्ट इनटू मैग्नेट सो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ता पाखु आसी गला सो कोन करिवो ना आयरन पेपर पिंस को सी अट्रैक्ट करिवो ठीक अछि ओके देन व्हेन सी ओपन द सर्किट जिते ओपन माने जिते स्विच ऑफ कर देला माने बैटरी कनेक्शन कट ऑफ कर देला द क्लिप्स फेल ऑफ तो क्लिप्स कोन ना पड़ी गला तार मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हेतिला सेउडा को ऑफ हे गला ठीक अछि ओके मोहिनी एंड आकाश वी आर सरप्राइज अरे एटा केमती हो मैग्नेट तो नहीं विदाउट मैग्नेट रे केमती हला सरप्राइज हे गले दे रिमेंबर लर्निंग अर्लियर से माने पढिथिले कोन एक्सप्लोरिंग मैग्नेट इन क्लास 6 रे पढिथिले कोन ना दैट मैग्नेटिक मटेरियल्स वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड दैट आयरन वाज ए मैग्नेटिक मटेरियल से माने पढिथिले कि मैग्नेटिक मटेरियल गुडा को ही मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट हो परिबे आउ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट से माने जानथिले बट एक्चुअली इट देखिबा कि भाई दुइटा जाक तो आयरन थिला आयरन नेल भी थिला आयरन पेपर क्लिप सो दुइटा जाक तो आयरन थिला आयरन नेल कथा जदि कहिबा सो आयरन नेल तो भाबो आयरन नेल मैग्नेट केमती हे गला जेतले सेतरे करंट फ्लो हला ओके सो बट इन सुमोनास मॉडल्स देयर वाज नो मैग्नेट सुमोनार मॉडल से हम देखली भाई मैग्नेट तो सेठी नाही दुइटा जाक आयरन ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट अछि दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वांटेड टू ट्राई इट आउट देमसेल्फ सो सेमान कहले नहीं आमे भी करिबा ठीक अछि सो तमे एटू कोन जानिलो ताले आमे किछु टाइम पाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करि परिबा गोटे आयरन को मैग्नेट रे कन्वर्ट करि परिबा केते बेले ना जते बेले आमे से आयरन ले करंट फ्लो कराइबा ठीक अछि एबे देखो डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैव ए मैग्नेटिक इफेक्ट गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट रो कोन मैग्नेटिक इफेक्ट थिबो कि यस थिबो भाई देखो कंपास रहिला कंपास को केवल रखा हिची कम पाई ना इट मेजर करिबो माने एक्चुअली से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होइछि ना होनी ठीक अछि ओके देखो लेट अस इन्वेस्टिगेट करिबा एंड जानिबा कि एक्चुअली होउछि कि ना नहीं फर्स्ट कोन करिबो कलेक्ट ए मैग्नेटिक कंपास एंड इलेक्ट्रिक सेल गोटे मैग्नेटिक कंपास आनिबा एटा मैग्नेटिक कंपास इलेक्ट्रिक सेल आनिबो आ गोटे सेल एटा कोन सेल होल्डर इलेक्ट्रिक सेल होल्डर आनिलो टू ड्राइंग पिन्स आनिबो ओके ए दिटा टू ड्राइंग पिन्स आनिलो एंड ए सेफ्टी पिन भी आनिबो स्विच पाई एटा सेफ्टी पिन आनिबो टू नेल्स आनिबो ओके तो ड्राइंग पिन्स आनिबो टू नेल्स आनिबो तापर कोन रहला टू पीसेस ऑफ कनेक्टिंग वायर दुई पीस दिटा कोन आनिबो ना कनेक्टिंग वायर्स आनिबो टू पीसेस ऑफ कनेक्टिंग वायर and the two small pieces of cardboard आनिबार अछि ओके सो यूजिंग two drawing pins dita drawing pins use karibo a safety pin and a cardboard piece make a switch so eta roila cardboard roila तो two pins okay drawing pins and गोटे safety pin की use करके हमें कौन करिबा ना गोटे switch बनैबा okay तो as you made it earlier in the class 6 रे जहां पढितलो that means electricity circuits and their component ओके तो क्लास 7 लो जोना पढथिले इलेक्ट्रिसिटी जहां पढथिले हमें ठीक अछि तो कार्डबोर्ड बनै देले स्विच भी बनै देले नाउ प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर सो सेल को हमें कोन करिबा ना सेल होल्डर रे प्लेस करिबा तापर कोन करिबा ना फिक्स टू नेल्स टू ए पेपर टू ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड तो दीटा नेल को कोन करिबा गोटे एटा रहला नेल एटा गोटे नेल तो दीटा नेल को कोन करिबा ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड रे कोन करिबा ना फिक्स करिबा एज शोन इन द फिगर ए फिगर जेमती देइछु ठीक अछि तापर कोन करिबा ना फिक्स द मिडिल पोर्शन ऑफ द लॉन्गर वेयर्स स्ट्रेच बिटवीन द नेल्स सो एटी मिडिल पोर्शन ले कोन करिवो ए मिडिल पोर्शन ले ओटे लॉन्गर वेयर स्ट्रेच करके एटी दीटा नेल्स से कनेक्ट कर दबो ठीक अछि तापर हमको कोन करिवार अछि ना सच दैट इट इज स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड तो कार्डबोर्ड रो सपोर्ट माने सरफेस रो टिके ऊपर को थिबो कोन पई
ना ता तले आम कौन करवा ना कंपास रखा कंपास कहीं रखा ना कंपास रो फंक्शन है आम जाचे ता भीतर मैग्नेटिक निडल अच्छी सो सी कौन कर ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो कराए जिते बड़े करेन्ट फ्लो हम ये वेयर रे तापर ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेबो ताले आम जाचे कंपास जो निडल अच्छी ये डिफ्लेक्शन कर ठीक अच्छे तर डायरेक्शन चेंज करदेव डिफ्लेक्शन हम जदि डिफ्लेक्शन है तुम जान कि ये वेयर कौन हो ना मैग्नेट रे कन्वर्ट हो जाए जाना देखा कौन हो कौन करवा अटैच वन एंड ऑफ द वेयर टू द सेल होल्डर तो यार गोटे एंड को सेल होल्डर सहित कनेक्ट करवा कह एंड अनदर एंड टू द स्विच आ गोटे एंड का सहित कनेक्ट करवा ना स्विच सहित कनेक्ट करदे ये ओके कौन करवा कनेक्ट द सेकेंड वेयर बिटवीन द सेल होल्डर एंड स्विच सेकेंड वेयर को कौन करवा बिटवीन द सेल होल्डर एंड स्विच सहित कनेक्ट करदेला ठीक अच्छे देन देखा कौन अच्छी ना प्लेस द मैग्नेटिक कंपास beneath the wear between the two nails two it दीटा nails थिला तो ता तळे आमे कोन करबा गोटे कंपास को रखिबा ठीक अछि स्पेस किछि थिला सो से स्पेस रे ही रखिबा तापर कोन होछि देखो तापर कोन हबो ना while watching the compass needle move the switch on जते बेले स्विच ऑन पोजीशन थिबो दैट मींस एतर कोन हबो ना करंट फ्लो करूथबो सेते बेले देखिबो तमे ना कोन हबो ना इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द वायर्स तो इलेक्ट्रिक करंट कोन हबो ना फ्लो हबो सो फ्लो हला पर जे कोइ क्वेश्चन कोन ना व्हाट यू ऑब्जर्व भाई ऑब्जर्व कोन करिवो तमे सिंपल जिंसो एट म कहै छु कोन जते बेले इलेक्ट्रिक करंट इतरे फ्लो करिवो दैट मींस फ्लो करला पर ए वायर कोन हे जिवो ना मैग्नेट रे कन्वर्ट हे जिवो जदी मैग्नेट रे कन्वर्ट हे गला जो एट मैग्नेटिक हमें कोन कंपास थिला ना ता भीतर जो नीडल अछि ये डिफ्लेक्शन हबो तो डायरेक्शन को चेंज करिवो ठीक अछि सो क्वेश्चन दिला व्हाट यू ऑब्जर्व तो तमे सिंपल कहि परिवो कि नाउ again while watching the compass needle move the switch to off position जते बेले तमे आगे स्विच ऑन कला तापर स्विच ऑफ पोजीशन करिवो व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम स्विच ऑफ कले भाई किछि डिफ्लेक्शन शो करिवोनी नीडल पोजीशन जेम थिला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पोजीशन थिला से पोजीशन सेम पोजीशन रे रहबो ठीक अछि सो आमे जानिले कि मूव द स्विच बैटरी ऑन एंड ऑफ जते बेले स्विच को ऑफ एंड ऑन करले पोजीशंस a few more times so carefully observe how the compass needle behave the each time so compass needle each time केमती behave करछ हमें देखिले so एटी कहबा कि you may have noticed that तमे नोटिस करलो कोन कि when current flow जते बेले current where flow करला the compass needle get deflected तो कंपास नीडल कोन हो डिफ्लेक्ट हो माने कोन कहिबो ना हलिबो ठीक अछि द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन तो ओरिजिनल डायरेक्शन कंपास नीडल कोन थिला नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन से आ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रहबो ने डिफ्लेक्ट होबो नॉर्थ साउथ न रही कि डिफरेंट डायरेक्शन को पळेबो ठीक अछि सो व्हेन द करंट स्टॉप्स जते बेले करंट तमे स्टॉप करैबो द नीडल रिटर्न to its original direction तो नीडल पुणी कौन करियो ता ओरिजिनल डायरेक्शन को पळे आसीबो दैट मींस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पळे आसीबो सो वी हैव लर्नड तो हमें कौन सिखले तो तले को सो वी हैव लर्नड व्हाट वी लर्नड नाउ वी हैव लर्नड अर्लियर हमें पढि दिले कोन ना इन एक्सप्लोरिंग मैग्नेट रे पढि दिले कि द कंपास नीडल इज टाइनी मैग्नेट व्हिच डिफ्लेक्ट when magnet is brought near it and this magnet effect can act through any non-magnetic materials kept in between. So हमें class 6 रे पढ़ते कि जो कंपास रो जो नीडल अछि दैट इज ए मैग्नेटिक नीडल. सो जते बेले आ गुटे मैग्नेट ता पाखो को आसीबो सेते बेले ये डिफ्लेक्शन होबो बोली हमें पढ़ते ठीक अछि. सो देखो बट व्हाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वेयर्स. भाई वेयर्स भीतर जो करंट हमें फ्लो करलो तो सेते बेले काई मैग्नेट माने डिफ्लेक्शन हला. एक्चुअली आ गुटे मैग्नेट एथरे डिफ्लेक्शन कर दना ये तो मैग्नेट ही नो तो डिफ्लेक्शन कोन पई हला. The deflection indicates that deflection कौन indicate करछि that the current carrying wires has a magnetic effect on the compass needle. So when the current stop जते बेले हम current stop कर दबा the magnetic effect disappear. अब magnetic effect देखा जीवनी disappear and the compass needle returns to its original direction. तो compass needle तार original direction को पुणी return करी आसीबो. So the region around a magnet
तो मैग्नेट चारि पाखरे जदि हम गोटे रीजन कथा कहबा द रीजन अराउंड ए मैग्नेट ओके और ए current carrying where its magnetic effect can be felt. So such as by the deflection of the compass needle, it's said to have a magnetic field. So एटू जणा पड़ला कोन जते बेले कंपास नीडल जते बेले डिफ्लेक्शन हला सो हमें जानिया पाइलु कि मैग्नेटिक फील्ड इट क्रिएट होउची बोली. सो मैग्नेटिक फील्ड कोंटी क्रिएट होबो देखो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड एट ही क्रिएट होबो. ए कंपास ए जो वायर रहिला द वायर दैट कनेक्टेड टू नेल्स जो वर्ड दिरा नेल को कनेक्टेड करछि तो ये ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करूछि एटी. ठीक है जते बेले करंट फ्लो होउछि मन रखथिबो एटा देखो ताले हमें जानिले कि when electric current flows through a conductor जते बेले इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टर रे हमें फ्लो करैबा सेते बेले कोन हम कंडक्टर मींस इट वायर बुझिबो. ठीक अछि इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ये कोन करिवो गोटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो. ओके दिस फेनोमेनन इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हमें को फेनोमेनन कोन कहि परबा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोली कहि परबा. ठीक अछि एटे कोन हला ना करंट फ्लो जो को मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हला सो इट इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके नाउ द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. जते बेले करंट फ्लो करिबा हमें बंद करिबा तो मैग्नेटिक फील्ड कोन हो देखा जीवनी हो. ठीक अछि डिसअपियर हे जीवो. ओके नाउ देखो we have learned about magnets and electric current in earlier grades. So I used to think that there was no link between two, but now we found that electricity and magnet effect are linked. जे हमें अर्लियर क्लास रे पढ़तले कोन से कहू छी कि जे मो अर्लियर क्लास रे पढ़तले मैग्नेट विषय रे पढ़तले इलेक्ट्रिक विषय रे पढ़तले इलेक्ट्रिसिटी बट मो भाबुतले कि समान के भीतर किछ इंटरलिंक नहीं बोली. बट ए चैप्टर रे पढ़े कि जाना पढ़िला कोन ना मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी दे आर लिंक टुगेदर. तो से माने कोन होचे लिंक होचे समान के भीतर. ओके सो बी ए साइंटिस्ट चलो बे साइंटिस्ट विषय रे जानिबा. ओके you have just now made the same discovery which was made by the scientist. Who is the scientist here? The scientist the Hans Christian Ørsted, that is in 1820. That is the discovery that electricity and magnetism are linked. तो ये discover करते ले electricity and magnetism are linked. एमाने एक दूसरे से link बोली एमाने शो करे थे. He was a professor at a university in Denmark. से डेनमार्क रे गोटे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे. It is said that once while giving a demonstration एटा कहा जाय जेतेबे डेमोन्स्ट्रेशन थरे दउतले he noticed that whenever an electric circuit was closed जेतेबेले इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज और ओपन क्लोज माने भाबिबो सेटा ऑन हला ओपन माने भाबिबो सेटा ऑफ हला बोली. ओके द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास तो मैग्नेटिक कंपास रो नीडल कोन हबो ना लाइंग नियर बाय डिफ्लेक्टेड. सो ये डिफ्लेक्टेड हबो. he investigate करले देन कोन हला ना when he was certain that an electric current indeed produce a magnetic field. Electric current produce kala magnetic field produce kala. He published his findings. This led to other scientists repeating his experiment to check if they got the same result. क्लियर कोन ना सेम रिजल्ट तांको मिलिना and further investigating the connection between electricity and magnetism. ठीक अछि. सो से फर्दर डिस्कवर करले कोन ना connection between electricity and magnet विषय रे जानले. ओके नाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट जदि कथा कहबा कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो मैग्नेटिक इफेक्ट कथा जदि कहबा has many practical applications such as in devices like electromagnets, electric bells, motors, fan, ଆଉ कोन loudspeaker and more बहुत गुड़ा है. current and magnet विषय अछि जानछो. So can we use electric current to make a magnet?
सो इलेक्ट्रिक करंट को आम कौन मैग्नेट बनवाई यूज करें कि यस वी कैन आम कर ठीक अच्छे एबे देखिबा कौन ना इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो सिंपल सा चीज देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन एक्चुअली ओके